Om. Om. सदाशिवसमारम्भां सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. So we'll say the 12th shloka of 12th chapter, which is the summary of the teaching. Shreyo hi jnanam abhyasat श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासः ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. त्यागः शान्ति अनन्तरम्. So here Bhagavan has summarized that 12th shloka that it's all abhyas to shanti. That's the goal. In the middle there is a sansar, UPMC yoga or all kind of thing in the middle. So our goal is to keep doing that abhyas to, because this is a journey, human life, like Jivan is, that's why the name we have given Jivan. You have to live it. So while living, you have to come across all these things. So abhyas, and the goal is shanti. So keep doing it. It's a loop, and then just complete the journey. So that's what this 12th shloka beautifully given. And in the middle, it says Bhagavan, Dhyan, Gyan, all the sadhanas come in the middle. Wonderful shloka. I mean, it can be contemplated for hours and hours. Right? Now we'll say the seventh shloka of second chapter, which is our prarthana, which is Arjun's prarthana too, basically. And that's what the answer to that prarthana is Bhagavad Gita. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. So our prayer to Bhagavan and same as Arjun, that we are deluded, we are confused, and then in that confusion we forget what is Shreyas. And he in the middle he said Dharma Samudcheta. Dharma means Swadharma here, and the Swadharma which takes me to the Shreyas, that is Swadharma. So Bhagavan Arjun says, you guide me towards Shreyas, Shadimam Tam Prapannam, my buddhi. I'm surrendering to you as a Shishya. Shadimam, my buddhi, you just take in the right direction. And that is actually the essence of Gayatri Mantra too. So now with that, that is answer to that is all Bhagavad Gita. So we'll conclude 16th chapter today. But before that, there are two things and it is related to this chapter. So nothing outside of Bhagavad Gita. So Ram Navami, we'll talk about Bhagavan Ram a little bit before we get into our regular 16th chapter, because today is Ram Navami. It's Thursday and Ram Navami. Why not to talk about Bhagavan Ram? But before that, I'm sure all of us, last week we have been a lot of WhatsApp groups, and in Indian, Bhagat Singh is remembered during 23rd was Bhagat Singh's Martyrs Day, or we call it Shahid Divas. I don't know why, but anyway, Shahid Divas, whatever we call it. So the reason I'm bringing, I have read about Bhagat Singh. Many of us have read. Bhagat Singh's diary is also published, which I read, his memoir. And it was very well known at the end that Bhagat Singh stopped believing in Bhagwan. I don't want to use what is Nastik, because Nastik has a very different meaning. So very, very different. It's a very different subject. But that Nastik
typically atheist, we think Nastik. So Nastik is very different. Atheist is, English translation has a problem. But Bhagat Singh stopped believing that there is someone who controls. Bhagat Singh was raised in a very religious family in Punjab. And most of us know, but know that if not, then it is worth knowing, right? Bhagat Singh went to Dayanand Arsh Vidya Guru, like school, where Punjab mein. And he wrote in his diary and that he used to do Gayatri Jap when he was young. And he used to do all kind of prayer, puja. And this chapter, that's what I'm saying, like how this Devi and Asuri Sampada, when Bhagwan says Sampada is nothing but possession, wealth. So you can possess the Asuri tendencies and you can possess Devi tendencies. And that Sampada, and this is not a physical, like material we are talking about, consciousness, right? So that what we have in our consciousness is our Sampada, and that is in psychology term or modern term, that is programming, or we call it conditioning. We are all conditioned to do certain things. हमारे यहाँ तो कर्म का सिद्धांत भी उसी पे चलता है कि वो वासनाएं भी you can carry forward. So we are conditioned, born conditioned. That's what our, but anyway, we'll not go to that. But it is all conditioning. And these days we see, right, in this world, this conditioning is a big issue. And conditioning turns into addiction in modern terms, right? So, and that example is given. That's why this chapter it's very important. This chapter and 14, they go together. Sattvagun, Rajagun, Tamagun, and based on that, you acquire these qualities. So, the reason I want Bhagat Singh, I'll tell why, because I love Bhagat Singh, that character. Everybody loves that. There is no doubt about that. But a lot of people started using, he was Nastik, Nastik, Nastik. But I just want to clarify what does it mean in this sense. So conditioning. For example, animals are conditioned to do certain things by birth. There is they कुत्ते को टमाटर देंगे तो नहीं खाएगा, खाएगा ही नहीं. एप्पल दे दीजिए आप उसको, कितना अच्छा पेड़ा भी दे दीजिए शायद वो ना खाए, लेकिन उसका जो फूड है वो खा लेगा. So dog is conditioned. All animals are conditioned. Dog will fight with dog. Dog will not fight with a lion. Dog knows there is a dog, I can fight. Here is a lion. Look at that. Dog has that. ये lion है, मैं इससे नहीं लड़ूंगा, ये कुत्ता इससे लड़ूंगा. They are conditioned. So, and there is a famous Subhashit, I mean, love, I have quoted many times, right? We say, Ahar nidra bhai maithunam cha saman etat pashubhi naranam. Ahar means eating, nidra means sleeping. Ahar nidra bhai means fear or insecurity, feeling of insecurity, which animals have. We have the same. Procreation, mathunim. We do, all four we do, same animals do. Then the second line of that Subhashit is the key. He says, Vivek hi tesham adhiko vishesho. Vivek is the only one which is extra in human being. Vivek hina pashuvi samana. Vivek hata to aap barabar ho gaye. It is not they are degrading them, but they are conditioned like that. So that is the only difference we get right from the birth. That's where we can change the conditioning. Because that Vivek is the one which, otherwise, we are all born with Sattvagun, Rajogun, Tamogun, Ravan. If nobody controls, then Ravan, in spite of all the Shastra knowing, he has become Asur. Conditioning. His Nana conditioned him to become Asur. So Vivek is the only difference. So we can condition. So what happened to Bhagat Singh? Bhagat Singh was very religious. He used to do Gayatri Jap and all those. He mentioned it. But when he was so frustrated, the British, and a young boy, 23-year-old, that's what happens, right? You want to get the result now. Now here are the leaders, Lala Rajpat Rai or Mohandas Gandhi or other, like, they have strategy, they are planning, but youth mind says, oh, get it now. It's like that. So he started feeling, oh, this is not working. So he was put in jail because there was a case against him. So in that time, Britishers were very shrewd. And even now there is a rule in India, many other countries, that even if you are in jail, you will be given the literature you want to read.
The intention was religious. Even today, if you want to read something. So Bhagat Singh got some books, and that time it used to happen. It was Lenin, Marx, all those communism, the revolution. He got those books. And if you read Lenin, Marx, even today, and I have read Marx, right? It's so convincing. It is so convincing. Oh, this is the way. So first thing they said, there is no God. Kadam. You are your own charge. So when he started reading those books, he realized, no, I mean, कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान नहीं होंगे, नहीं तो क्यों होना चाहिए था ना? That is called conditioning. So look at that. What a great. But Bhagat Singh still cannot. I mean, people say, no, I just don't, because he was a young person. If Bhagat Singh survived after freedom movement, he would have changed, because that time he's get. And the reason is because Bhagat Singh ने अपने मेमोर में जो लास्ट वो लेटर लिखा था उसमें उसमें लिखा हुआ सब शब्द यूज किया है कि विवेक की सहायता से मैं विजय चाहता हूँ. आई मीन उर्दू में लिखा था, बट so now how he say Vivek, because he knows, he has studied, right? गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, सब भगवत गीता जो पढ़ा होगा. And then he says प्रयत्न ही मनुष्य का कर्तव्य है, सफलता असफलता वातावरण और अदर फैक्टर्स पर निर्भर है. That's what Bhagavad Gita says, all our teaching says. So that means that he has not forgotten the teaching, but that particular time he wanted to do. So he said, ना अभी भगवान छोड़ो, let me do that. And जब when he was being hanged, in fact, they said that you want to read now something, some literature, like religious book, कोई ग्रंथ साहब पढ़ना, कोई गीता. He said no. He said अब मैं पढ़ूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं भगत सिंह डर गया भगवान से, अभी तो नहीं पढ़ूंगा. Then he quit. Whereas his own friend Rajguru and the three got hanged, they were doing prarthana, and he knew that. So again, I just want to, because a lot of people say Bhagat Singh ऐसा नहीं था. Bhagat Singh, only thing, भगत सिंह की भक्ति भगवान से देश में चली गई थी. He was a भक्त. You can't give your life unless you are a भक्त. So उसकी भक्ति भारत माता में चली गई थी. तो उस समय भगवान उसको लगा कि अभी मैं करता हूँ. We had to take an action. That's why he took law in his own hands, because he said no, it's not working. So yeah, so I was just reading Bhagat Singh. देखिए conditioning से कैसा होता है कि वो few books condition him to say कि नहीं भगवान नहीं है. And that's what happened in communism, right? There was a time when people started believing there's no God. Even China, I have a friend here in Chinese, I asked him कि वो तुम लोग क्या करते हो साल में, कोई any festival? He said no festival. I said any prayer? No prayer. I said do you have a picture at home? No, there is no picture of anything. Whose picture? He lives here in Mount Lebanon. He says I don't. But there's conditioning. So okay, so that's what this chapter is talking about, Devi and Asuri. And the first श्लोक में definition है, देवी, the divyati prakashyati iti dev, the one who enlightens or who give light is dev. And asusu ramante iti asur, if that which revels or which like revels or basically dwells in senses is asur. Now we can feel ourselves. हमारे अंदर ही ऐसा कुछ रावण नहीं. If I am more towards the senses and towards all the material thing, then there is a asuri vritti. Bhagavan says, hold on, Arjun. I'm telling you this. There's a reason. If while shooting the arrow, if hinsa comes to your mind, and then this is asur, shooting the arrow. But while shooting the arrow, there is no hinsa. You still have the same love, because it's the sadhar. Then you are shooting the arrow, you still have Devik Sampada. And that's what the goal of the भगवान को चैप्टर को अर्जुन को बताना पड़ा, कि अर्जुन को लगने लगा कि ये मैं कुछ क्या गलत काम कर रहा हूँ. नो, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, देन सो भगत सिंह को भी कोई अगर समझाने वाला मिल जाता तो भगत सिंह डेफिनेटली मान लेता, कि पता तो था ही उसको, बट कोई मिला नहीं. एनीवे, दैट्स so that's what I thought we'll talk about. But this is important. He is conditioning. So that, I mean, yesterday there was, I mean, I'm not deviating, but this is very close to my heart, this topic. Meta, Facebook and Google, they had a hearing in LA, and actually court has said them, the lady who filed the case, the plaintiff, and she is saying that when I was young,
I got addicted to Instagram, Facebook, and YouTube, and that has I have suffered my like the personal life. My self-worth is lost because of you people. And cases, court has given verdict. I mean, they're going to go to high court, but they have money, so they'll do whatever. But we can see our children, and parents are saying our children are there. It is affecting their mental health. They're committing suicide, and we know that has happened in our town very recently. So they are going, and what this is conditioning. If they constantly watch, we all right. If you constantly watch phone for 2 hours, your दिमाग खराब हो जाता है, बंद करो इसको. It's like that. But we understand. Kids don't. And there is again that FOMO thing, right? Fear of missing out. And that's a mental problem. It is, so that is conditioning. So that's what, like, this chapter is, this thing is said thousands of years ago. Still valid. If you don't have the Devi Sampada में ऐसा कुछ नहीं, कुछ भगवान हो जाना है. Just those qualities which we, Abhayam Sattva Shuddhi, the purification of mind, there's fearlessness. Fearlessness means less feeling of insecurity. Fearlessness means nothing that I feel less insecure. I'm Abhayam, fearless. And that's what we, so anyway, so I thought these two things, but let's talk about a few minutes about Bhagwan Ram, and then we go to our 16th chapter conclusion part. So Ram Navami, so let's say one Bhagwan's stuti. Lokabhiramam Ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakarantam Sri Ramachandram Sharanam Prapadde Sri Ramachandram Sharanam Prapadde. Hari Om. So Bhagwan Ram, and we'll talk few minutes. I mean, it's anyway. Some of you have registered for that Ramayana session. We'll start on 6th. We'll talk 12 weeks the entire Ram. बहुत मजेदार है. It's a very different subject, right? गीता में जितना आनंद आता हो, it's a very different आनंद in that Ramayana. So we'll talk about it. But today we'll just briefly, because Ram Navami is there. It's a vast subject. The bandwidth this character has, Bhagwan Ram. Oh, I mean, just आप छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े आदमी तक टच कीजिए, राम इज एवरीवेयर. इट्स लाइक दैट. सो अद्भुत कैरेक्टर. But we cannot talk all things today. I just thought we'll talk about one of the messages Bhagwan gave. And because we are talking the last slok of this chapter, when we'll conclude, it says, Tasma Shastram Pramanam Te. And Bhagwan says, ki Arjun, if you want to know what is Devik or what is Asuri, if you have confusion, go to Shastra. Shastra is not just the books. Even Guru Vachan is Shastra. क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले वचन ही थे, लिखा तो बाद में गया है. पहले तो सब श्रुति परंपरा थी. I mean, they are just saying, there is nothing written. So wisdom words of wise people is a Shastra. So Bhagavan is saying, if you have a doubt, they are Praman, go to them. And go to Shastra, and then get the answer. The last slok will repeat. So Bhagwan Ram's life is Shastra. Every step in Ramayana, जो पढ़ते हैं, everything, it is all teaching. I mean, if you go deep inside, marvelous character. There is a teaching, everything. So anyway, there are so many things. So I thought we'll just briefly touch one of the, I'll say, the easiest or the best teaching was Navdha Bhakti. Shabri, now look at that. Shabri was not literate. She was not educated, tribal lady. उसको बताना, and here is Ram. वो पूछ रही, मुझे बताइए मैं क्या करूं. Now look at, he has to tell the शास्त्र to Shabri. राम के मुंह से आएगा तो शास्त्र ही आएगा, कैसे बताएंगे. लेकिन बताया. And that is Navadha Bhakti is one of the best part in Ramayana also. So we'll just very quickly touch that. So there are so many things in Bhagwan Ram, but so Bhagwan says Pratham Bhakti Santan Kar Sangha. So pehli bhakti is the company of good people, satsang. What we do is satsang. And that's what they are talking about when they are saying Facebook and Instagram. You people are taking away those personal connections. Satsang means personal connection, having good company of good people.
जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, और मंदिर यू डोंट हैव टू गो फॉर भगवान टू मंदिर, चलो मंदिर चलते हैं, टुगेदर वी आर गोइंग देयर, दैट्स व्हाट, चलो दर्शन करने चलते हैं। देयर इज अ चलते हैं, देयर टुगेदरनेस, दैट इज सत्संग। साथ में मंदिर जाना ही सत्संग है, वहां बैठते हैं साथ में भजन करते हैं। सो भगवान से प्रथम भगति का संतन कर संगा। सो what is essence of शास्त्र, राइट, कि सत्संग इज मोस्ट फर्स्ट भक्ति। देन दी से दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनना मेरी भगवान की। एंड कथा इज अ वेरी यूनिक टू सनातन धर्म एंड हिंदू ट्रेडिशन, वेरी यूनिक। मतलब राम, हम लोग वी ऑल हैव, एटलीस्ट आई एम पर्सनली हियरिंग मोरारी बापू सिंस आई वाज ऑफ 12-13 ईयर ओल्ड, लाइक समथिंग। 50 साल से मोरारी बापू को लोग सुन रहे हैं, एक ही कथा करते हैं वो। 50 साल से ही जस्ट डूइंग रामायण कथा, लेकिन अब लोग सुनते रहते हैं। वो वही, ही कैनॉट, आई मीन देयर आर ओनली 7 चैप्टर्स एंड 1000 स्टोरीज, बट स्टिल गोइंग ऑन, बिकॉज कथा में रस आता है। सेम कथा बार बार सुनते हैं, नथिंग न्यू, राम कथा कितनी बार सुनेंगे, लेकिन उसमें रस आता है। सो भगवान से कथा सुनो, एंड दैट्स द रीजन वी हैव द ट्रेडिशन ऑफ भागवत कथा, और जो भी है, बहुत सारी हमारे यहाँ कथाएं होती हैं। कथा इज द इजिएस्ट वे टू द स्पिरिचुअल साधना, वी कैन से। देन भगवान से तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, बिलीव, श्रद्धा। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें श्रद्धा त्रय विभाग, अर्जुन इज गोइंग टू आस्क ये श्रद्धा कैसे आएगी, एंड भगवान इज एक्सप्लेन इन 17 चैप्टर टाइप ऑफ श्रद्धा। दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग, गुरु पद पंकज में शास्त्र और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। आई मीन इफ यू कीप क्वेश्चनिंग, लर्निंग डजंट फ्लो। क्वेश्चन यू कैन आस्क, दैट डजंट स्टॉप, बट या दैट श्रद्धा। चौथी, मम भगति मम गुण गण गाए, मेरे गुण गाना, कीर्तन। कीर्तन जो हमारे यहाँ शब्द है, उसका मतलब ये सिर्फ भगवान के गुण गाना है कीर्तन में, दैट्स इट। सो पांचवी, मम दृढ़ विश्वासा, या दैट सेम थिंग, श्रद्धा भगवान से। छठी, दम सील बिरतु बहु कर्मा, विरक्ति, वैराग्य। तुलसीदास जी इज वेरी स्मार्ट, ही हैज यूज्ड दोस संस्कृत ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ड इन अ वेरी कोलोकियल लैंग्वेज। वैराग्य को विरति बना दिया उन्होंने, एक ही चीज है, वैराग्य को उन्होंने अवधि में विरति बना दिया। विरति, विरति से बहु कर्मा, वैराग्य से कर्म करो, दैट्स व्हाट द होल भगवत गीता इज। निष्काम कर्म इज दैट्स इट, दैट्स व्हाट भगवान इज टेलिंग। लेकिन कितना आसान बना के भक्त शबरी को बता रहे हैं, क्योंकि शबरी को भी निष्काम कर बोलेंगे, अर्जुन को बोलेंगे तो ठीक है, अब शबरी बेचारी, तो भगवान कह रहे हैं विरत बहु कर्मा, बस वैराग्य से कर्म करो। वैराग्य से मीन भगवान को समर्पित करके। एंड सातवीं, मोहि मोहि मैं जग देखा, मुझे सब में देखो, सिया राम हूं मैं सब जगह, एवरीथिंग इज भगवान, एवरीथिंग इज डिवाइन, दैट्स द टीचिंग। कितना आसान भगवान बताती। आठवीं, यथा लाभ संतोषा, भगवान शुभरी कह रहे हैं कि आठवीं भक्ति है संतोष, द कंटेनमेंट। कंटेनमेंट इज भक्ति, भगवान कह रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें तुलसीदास जी का अपना फ्लेवर है, बट तुलसीदास जी का भी फ्लेवर कोई, आई मीन ही डजंट क्रिएट, वो भगवान की कृपा से आता है। वो बोलते हैं मैं कुछ थोड़ी बनाता हूँ, भगवान ने लिखवाया तो मैंने लिख दी। तो राम ही कह रहे हैं संतोष, कंटेनमेंट, एंड दैट इज अ भक्ति। लुक एट दैट, कंटेनमेंट जनरली कई जगह बुक्स में लिखा रहता है कि इससे यम और नियम, एक जगह लिखा हुआ यम नियम में संतोष आता है, यहाँ भगवान कह रहे हैं संतोष तो भक्ति है। अगर आप संतोष कर रहे हो तो भक्ति कर रहे हो मेरी। क्या भगवान ने उसको सरल बनाया है शबरी के लिए, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा शबरी को आसानी की, भाई जो है उसमें खुश रहो, दैट इज संतोष। एंड लास्ट में भक्त है नवम, सरल सब छल ही ना, छल नहीं करना, हिपोक्रेसी नहीं करना, किसी के साथ भी है, जो है वही बोलना है। छल मीन्स नॉट सेइंग द विच इज नॉट रियल, दैट्स इट। एंड भगवान से दैट इज भक्ति। तो कितना बढ़िया है भगवान ने भक्त, मतलब इतना सिंप्लीफाई कर दिया है शबरी के लिए, दैट इज शास्त्र। तो यहाँ भी जो भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण में लोग डर जाते हैं, शास्त्र में कोई कुछ कुछ नहीं। शास्त्र का मतलब ज्यादा जानना नहीं है, शास्त्र का मतलब है समझना है। एक ही चीज समझ में आ गई तो भी शास्त्र है। ज्यादा जान के भी, 10th चैप्टर के एंड में भगवान ने अर्जुन को बोला, जब विभूति पूरी बता दी कि वो आई एम इन हिमालय, आई एम इन दिस, आई एम दैट, तो भगवान ने तभी बोल दिया कि ये सब जानने की जरूरत नहीं, सब ये कि मैं सब में हूँ, that's it। तो 10th चैप्टर में एक श्लोक में भगवान ने बोला भी है कि रामः शस्त्र भतामहम, शस्त्रधारी हूं मैं, राम हूं।
कृष्ण बोले पहली एक ही जगह भगवान राम का नाम भगवत गीता में आया है, शस्त्रधारियों में. Why he is saying शस्त्रधारी means the possessor of weapon. The weapon should be in the person who knows how to do justice, not like firing missile all over the world and disturbing the entire. That is not the use of weapon. Weapons were not created for that. इसलिए अभी हम देख रहे हैं, like we are all affected by that. Few people's ego and they got the weapon now. Now it is like everybody is Ravan now. Just keep fighting. So इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि राम शस्त्र भतामहम. मैं ऐसे आदमी के, राम जैसे आदमी के हाथ में जब शस्त्र आएगा तो वो तभी, ओनली इट विल बी यूज व्हेन देयर इज रियली अधर्म इज देयर. इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव कि मेरे पास भी तुम्हारे पास भी, मैं भी मारूंगा तुम भी मारो. विल एंड अप इन मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. And we are going towards that, making the whole world blind. People are suffering. So that's a classic example. That's what Bhagavan says, Rama Shastrapatam. Shastradharium mein Ram. The one who can, that is because it's Maryada Purushottam. He exactly knows when to use. In fact, Ramayana में एक छोटा सा प्रसंग आता है when Bhagavan is, I mean, I don't want to go to Ramayana, but it's very interesting when you think of Ramayana. Even Bhagavan is going to Vanvas, and he says कि लक्ष्मण, गेट द धनुष विच जनक जी ने उनको दिया था, उनके पिताजी ने एक धनुष था, वो लेके आओ, वो लेके चलेंगे. सीता जी ने देखा एंड शी नोस कि राम के हाथ में धनुष है, तो वैसे भी, तो उसमें प्रसंग आता है, तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, सीता जी ने बोला कि आई हैव ए क्वेश्चन हियर, आई एम लिटिल कंसर्न. भगवान से, व्हाट इज द कंसर्न यू हैव? शी सेज, you have the dhanush in your hand, you're going to the vanvas, right? अब वनवास उन्होंने इसलिए लिया था कि राम जी नोस कि व्हाई ही इज गोइंग टू वनवास, ही हैड द प्लान, राइट? सीता जी सेइंग कि आई एम अफ्रेड दैट कहीं आपके हाथ से अधर्म ना हो जाए. क्या बात है, धनुष है तो कहीं गलत किसी पे ना चल जाए. देन भगवान सेज, होल्ड ऑन सीता, डोंट वरी. एंड दैट्स व्हाट ही सेज, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम. तो भगवान ने बोला कि ये उनको अभी हर कंसर्न वाज राइट कि यार कि ऐसा नहीं कि आपके हाथ से कोई गलती, वायलेंस हो जाए. ही सेड नो, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम. ही नोज एग्जैक्टली व्हेन टू यूज इट, राइट? बाली आएगा या रावण जो भी, एनीवे. सो दैट्स व्हाट राम जी, आई थिंक इट्स गुड टू रिमेंबर भगवान राम. जय श्री राम. We can talk about Bhagavan Ram a lot, but let's get back to our, so 16, the last shloka of the 16th chapter. We'll conclude. So again, the conclusion is that there are Devi Asuri Sampatti, how, which to avoid, which to acquire, is the Shastra, is the Praman. And Shastra, again, Shastra means the word of wisdom. So that's what 24th shlok, that is the last, and that actually concludes the chapter also, right? So 24th shlok of 16th chapter. Tasmat Shastram Pramanam te तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते Karya Karya Vyavasthitau कार्याकार्यव्यवस्थितौ Gyatva Shastram Vidhanoktam ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं Kartum Karma Kartum Arhasi कर्म कर्तु Tumi. मिहर्हसि. इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है. ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है. Therefore, the scripture is the authority in determining what ought to be done and what ought not to be done. Having known what is pronounced in scriptural ordinance, we should perform action here. So again, like as we talked about Shastra. So the word Shastra, people एकदम से कुछ बहुत कुछ होने वाला है. And then Gita very very clear, it is not. By definition, Shastra, last time we saw that. Shasana Trayate iti Shastra. Shas Shabd is, Shas means to guide, to provide knowledge, or to administer. That's why India में शासन प्रशासन बोलते हैं, administration. Administration is not forcing, providing you the right direction, right guidance. So here is the way things to be done. That is Shastra. Trayate means protection. The Trayate. So by giving the right guidance, the one which protects you is Shastra.
That's perfect definition. So Bhagavan is saying anything which maybe your friend, maybe your brother, maybe your father, maybe your neighbor, anyone who is giving you a guidance which protects you from doing something wrong, that is Shastra Vakya. So you don't have to always open the big book and do that. I mean, people can read books and there's no. So there was this guy, I mean, we talked about many times, right? But again, the condition is that it's not about knowing, it is about understanding. Knowing 10 things or 100 things doesn't matter. Do I understand even one of that or not? So, like, I have gone through Gita many times. Gita has gone through me even once or not. That's the question. And if that question is unanswered, which is unanswered, which remains unanswered for most of us, so keep doing it. Shreyo hi jnanam abhyasat. करते रहो. See, that's what Bhagavan is saying. Jnana dhyanam vishishyate. फिर ध्यान करो. फिर श्रवणम निदिध्यम मदित्या. श्रवणम मननम निदिध्यासम. Keep doing it till you understand. Oh, this is what. एक बुद्ध को हुआ था. He's sitting 12 साल तक घूमते रहे. उसके बाद 12 साल लग जाएंगे. He said, I am not doing anything. Sitting under the tree, Bodhi tree, whatever. And then he realized, oh, that's it. He said, oh, now I got it. Etat Buddha, 15 or 14 chapter end with Etat Buddhva Kratkratyasya Bharat. Knowing this tattva se, you're done, fulfilled. That's what Bhagavan says in the Shlok. So knowing is important, not knowing how much. Understanding is important, basically. So that's what Bhagavan is saying. He Shastra, Gyatva Shastra Vidhanoktam. Vidhan means again like the rules and everything. Kartum kar arsi. Then you are karma karne yogya. See what he is saying? Go to Shastra, understand it and do it. ये तो बोलते ही हम लोग वैसे भी रहे. हम लोग छोटे थे तो हमारी एक हिंदी की पुस्तक थी. आई स्टिल रिमेम्बर कि वो लास्ट पेज हमें बहुत डर लगता था जाने में, क्योंकि लास्ट पेज में बड़ा बड़ा लिखा था. उसमें वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया. एवरीबॉडी वर स्केयर्ड. उसमें लिखा था पढ़ो, समझो और करो. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर कि पहले पढ़ो किताब, समझो मीन्स टीचर से क्वेश्चन करो, यू इंक्वायर होमवर्क, और फिर करो. करो मीन्स लाइक एग्जाम आता था बाद में, तो करो मीन्स ना एग्जाम, तो डरते थे हम लोग. बट दैट्स व्हाट exam is nothing but testing your understanding. That's exam. If I know that the anger is not good for me and I get angry 10 times a day, I mean I fail the exam 10 times a day. That means I didn't understand the anger. I mean, I know that anger is not good. वो सब मुझे पता है, लेकिन I didn't understand कि anger is not good. Knowing that anger is not good is not enough, right? Not getting angry is the understanding. वो जैसे वो एक आदमी था कि उसने बोला कि मेरे को यार, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हम लोग रिवर के पास रहते हैं तो स्विमिंग आनी चाहिए, क्योंकि तो उसने कहा रिवर तो बहुत बड़े, तो उसने कहा एक स्विमिंग पूल है, तो छोटा सा पॉन्ड है, उसमें सीख लो तो यू कैन स्विम इन रिवर. तो चलो चलते हैं. वो लेके गया उसको. अब ऑब्वियसली स्विमिंग का रूल ये है कि उतरना तो पड़ता ही पानी में. थोड़ा डरता भी था. अब उसको किसी ने धक्का जैसा होता है कि वो पानी में गिर गया. और उसके बाद we all know that, we all have that experience कि first time is very fearful, right? यार ये क्या हो गया, मर गए. तो वो बहुत उसको पानी में दिया, बाहर निकला, and he said वो, और somehow he just saved himself. And then he said कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम है. तो बहुत डरता था वो. तो उसके बाद उसने कहा कि मैं स्विमिंग के बारे में थोड़ा पढ़ूंगा पहले. उसने फिर अपनी किताब ली, जैसे होती है ना बुक्स होती है लाइब्रेरी में, स्विमिंग 10 डे स्विमिंग लेसन, वो पढ़ लिया उसने. फिर गया वो, फिर वो गिरा और फिर वो उससे हवा में बाहर आ गया. उसके दोस्त बोला क्या हुआ? उसने कहा मैंने एक कसम ले ली कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा पानी में नहीं उतरूंगा. और स्विमिंग की किताब भी पढ़ ली, सब पता है, लेकिन अब पानी में नहीं उतर, अब कैसे करोगे? हम लोग एक्चुअली वैसे ही हैं सब. हम लोग जब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय हमें मतलब ये पक्का हो जाता है कि हमें सब आ गया है, लेकिन हम उतरना नहीं चाहते. उतरेंगे नहीं जब तक सीख नहीं जाएंगे. तो कैसे सीखोगे? इट्स लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि शास्त्र विधानों तो देन कर्तुम करहसी, यू आर एंटाइटल्ड टू एक्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट. जब समझोगे तब करोगे. करते तो हम सब लोग हैं, लेकिन फिर गलत सलत करेंगे. एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर द कंडीशनिंग कम इनटू पिक्चर. सो शास्त्र का मतलब है कि डिकंडीशनिंग फॉर व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड कंडीशन व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो अब गायत्री मंत्र, ये मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा ही पढ़ ली, वो हमारी एक वो अपनी हमारी माई नीस, उसके बच्चे हैं,
एक दिन वो हमारे आए हुए थे, छोटे छोटे हैं वो, 7 8 10 साल के, गीता क्लास में भी आते हैं। एक बार वो यहाँ आए हुए थे पिट्सबर्ग, तो जल्दी से नहा के आया और दौड़ के गए भगवान के आए, कुछ 2 मिनट कुछ किया और वापस आ गया। आई सेड व्हाट डिड यू डू इन 2 मिनट्स? ही सेड नो, वी सेड पावरफुल लाइन्स ऑफ हनुमान चालीसा। पावरफुल लाइन्स ऑफ हनुमान चालीसा, उनको 2 3 लाइन जो अच्छी लगती हैं वो उन्होंने याद कर ली। बट आई सेड दैट्स गुड, दे गॉट द मैसेज। इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर ऑल 40, उनको 2 3 पसंद आ गई जो भी होगी। उनको मैंने पूछा नहीं कौन सी थी, पर उनको लाइक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की कोई जगह राम दूत अतुलित बल धामा, बस वो याद हो गया हनुमान चालीसा। देर राइट, उनको ये समझ में आ गया कि इसको बोलने से हनुमान जी जैसी ताकत आती है। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम लोग अपने घर में, हम वी ऑल नो दैट राइट, हमारे घर जब भी कि उसको वो दूध नहीं पी रहा है या समथिंग, दे डोंट ईट प्रोटीन वोटीन, उसको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, लुक एट दिस गाय इज सो स्ट्रांग बॉर्नवीटा। वो बच्चा पीने को बोलता हो आई एम, उसी समय स्ट्रांग हो जाता हो, आई एम स्ट्रांग। दैट कंडीशनिंग, ऐसा हम लोगों को भी होता है। हम जो कथा सुनते हैं कि हम वो आ गया, लेकिन होता नहीं, होगा नहीं। वो फीलिंग है, होगा तब भगवान कहते हैं जब समझोगे। बच्चे को समझ थोड़ी आया, तो वो सोचता है मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, बट वो बड़ा होगा समझेगा कि नो, स्ट्रांग ऐसे नहीं होते हैं। स्ट्रांग होते हैं व्हेन यू डाइजेस्ट इट। तो सेम थिंग द टीचिंग भगवान से कर्तुम अर्हसि, यू आर एंटाइटल्ड, यू डाइजेस्ट द टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग व्हेन शास्त्र की बात करते हैं। बट एनीवे, वी सो गोइंग बैक टू द संपदा अगेन, वी हैव टू recap the first part, right? So Bhagwan is saying this sampada, we all know that, I mean everybody knows truth क्या है, बोलना चाहिए, सबको सब पता है, but that's whole thing. So there is a very beautiful word हमारे संस्कृत में है, which is not many languages have that. It's a निष्ठा, very popular word, निष्ठा। गीता में क्या जगह है, निष्ठा is a Sanskrit word, ni stha. Stha means established, स्थान जैसे शब्द है established, ni means very deep inside. When this knowledge is deep inside, settled, that is निष्ठा। तो ये जो संपदा है, it's like that. I give a check to someone. It is till it is deposited and realized, it is still called unrealized check. हम लोग रेंटल होता है ना, तो अभी तो कम होता है, पर पहले होता था रेंटल में, यू गिव 12 चेक्स एंड आई एम गिविंग अ चेक फॉर द October and January. The check is unrealized till October comes. Still it is sitting with the rental agency, but it is unrealized. It will be realized. So same thing with the ज्ञान की संपदा तो ठीक है, but it has to be realized, and that is called understanding, and that's what भगवान is saying, that is called निष्ठा। तो कई बार हम लोग बोलते हैं धर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ में दिस पर्सन नोज व्हाट धर्म इज, धर्म की डेफिनेशन नहीं, आई नो व्हाट धर्म इज, देन धर्मनिष्ठ। सो दैट इज, सो एंड द निष्ठा, देयर इज अ होल डेफिनेशन what, so sampada becomes nishtha when you understand, and nishtha gives the gati. There is a whole formula, but anyway, gati means the movement. So nishtha provides the movement. Movement means how I navigate in the life. So I have sampada, I know sampada, but when it is nishtha, it becomes my sampada. Then I traverse or navigate in the life, then I am using that sampada. Otherwise it is unrealized, checked. So that's what Bhagwan, that's what Bhagwan is saying. Kartum karhasi means you have that nishtha, you have the understanding. Now you navigate life, you will enjoy the life because you know exactly what is. वो एग्जाम जैसे हम लोग, and that nishtha and provides you gati. Gati means the proper movement. अभी आप लोग कभी, हम लोग भी all, I mean I love that, everybody loves that 100-meter sprint race, right? Olympics में, one of the best, like everybody loves that. 10 seconds it is over. But so if you observe, those people are standing, front leg, left leg, there is some small kind of stopper and everything, and their hands are like this, and everybody is in, and when they say get set go, they'll just get up and just sprint. And we see that some people just drop or fall because the start is wrong, the gati is wrong, then you lose the race. Sometimes they don't complete.
So exactly, if we have the nishtha, we'll have that kind of gati. Ekdam sprinting. It's like that. There's no doubt then. And that's what Bhagavan is saying. Kartum karhasi. You are entitled. Anyway, it's a long subject, but it's very interesting also. But again, the bottom line is that बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. जो जाना वो समझना आना चाहिए. वो उधर was there's one guy who was not very knowledgeable. वो भगवान की पूजा करता था अपना, रोज सुबह उठता, सूर्य भगवान देखे, जो भी है, जब सिंपल होते हैं गांव में भी होता है, जैसे पेड़ के सामने जब प्रार्थना वार्थना करी, तो पंडित जी यूज टू पास बाय दैट. ही वन डे ही सेड, देखो भाई, मैंने देखा कि तुम रोज ही प्रार्थना वार्थना करते रहते हो, गलत सलत बोलते रहते हो. तो संस्कृत कुछ आती है, जो भी तुमने सुन लिया आधा आधा बोल देते हो. उसने कहा भाई मुझे तो थोड़ी बहुत सुनी है, जो याद आया तब बोल देता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, इधर आ जाओ ट्रेनिंग. उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं. तो वो गया, उसने उनने सिखाना शुरू कर दिया उसको. अब नाउ ही इज गोइंग थ्रू ग्रामर एंड फोनेटिक्स एंड ये वो सब ठीक है अपनी जगह, देयर इज अ वैल्यू ऑफ दैट. बट दिस गाय लाइक, ओके ठीक है. अब वो सीख आया और उसको स्ट्रेस होने लग जाती थी. अब वो बोलता है वहां जाके. तो एक दिन वो पंडित जी के दरवाजा किसी ने खटखटाया. कहानी है, पंडित जी ने खोला, कौन है भाई? उन्होंने कहा, मैं भगवान बोल रहा हूँ. अरे आप कैसे आएगा प्रभु? मैंने क्या बोला, आपके लिए नहीं आया. तो बोले फिर कैसे आया? उन्होंने कहा यार वो मेरा भक्त था और रोज प्रार्थना करता था, मुझे इतना मजा आता था, मैं सुनता, तुमने उसको कुछ बिगाड़ दिया, वो पता नहीं क्या करता है. तो पंडित जी को समझ में आया कि तो क्षमा करो प्रभु. तो भगवान ने हमारे यहाँ बड़ा क्लियर किया है. कहीं भी पढ़ो नवदा भक्ति, तो इसीलिए भगवान ने बुलवा दी कि शास्त्र से मतलब ये है कि जो जानो ठीक से जानो. तो वो हम भगवत गीता पढ़े हैं या जो भी पढ़े, ठीक से पढ़े, समझ के पढ़े. एंड इट टेक्स टाइम. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. The श्लोक इज श्रेयो ही ज्ञानो अभ्यासात ज्ञानात् ध्यान विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांति अंतरम. जिस दिन ये त्याग अपने आप हो जाएगा, ये त्याग इज अ वेरी पावरफुल वर्ड. द मोमेंट आई से त्याग, द फीलिंग कम्स बिकॉज वी आर कंडीशन. somebody has taught me, not this birth, maybe many birth, that कुछ करना पड़ता है. त्याग मीन्स जान लगानी पड़ेगी. नो, भगवान से त्यागात, जिस दिन त्याग अपने आप हो जाएगा तब शांति मिलेगी. त्यागा शांति अनंतरम, देन यू गेट द, एंड दैट इज द साधना. फिर अभ्यास करो, नहीं होता है मतलब वही शास्त्र पढ़ो समझो. एनीवे, so we can keep talking on this, but this is what Bhagwan is meant here. So we'll read the last shlok, which is at the end of every chapter. But like one more just thing, I just want to say that, I mean, going back to Bhagat Singh, it's. I mean, I mean, मैं तो भगत सिंह को पहले से बहुत. I mean, I love him. Everybody loves him from the childhood. But when I started reading कि वो भगवान को था, तो I was always wondering, but I still believe that अगर भगत सिंह अभी होता, तो he said no, that was for that incident I wanted to do. So that time I want to. But इस भगत सिंह जैसे लोग एथिस्ट हो ही नहीं सकते. भारत माता से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, बात एक ही. प्यार, जो आदमी प्यार रामकृष्ण परमहंस, एक आई डोंट नो, किसी सन्यासी का एक इंसिडेंट ट्रू है कि उनके पास कोई यंग आदमी गया एंड ही सेड कि मैं बहुत पूजा करता हूँ बट कुछ बात बनती नहीं है. आई मीन समथिंग इज नॉट गेटिंग लाइक, वो भगवान ने बोला ना, कर तुम अरहसी, वो आता नहीं है. तो उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी को प्यार किया है? यही वॉज अ काइंड ड्राई गाय, होता है ना बहुत सारे लोग. इसे प्यार, अभी प्यार वार क्या करना? उसने कहा फिर कुछ नहीं होगा, जाओ पहले प्यार करना सीखो किसी को भी. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो भगत सिंह जैसे लोग तो एथिस्ट हो ही नहीं सकते. जो प्यार करते हैं वो कैसे एथिस्ट? भारत माता को प्यार करता था. दैट्स इट. जो आदमी खुशी खुशी जान दे सकता है भारत माता के लिए, उसका उसका शेर था भगत सिंह का, जब उसने आखिरी में जो बोला था, जो बड़ा मशहूर से, लेट मी इल कम टू मी राइट. अहले अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं. खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं. तो उस अहले वतन, अहले मीन्स पीपल, वतन मीन्स द पीपल ऑफ पीपल. अहले मीन्स पीपल, वतन मीन्स देश, राइट. तो देसी, अगर अहले वतन का अगर अमेरिका में देसी, देसी मीन्स अहले वतन. तो भगत सिंह कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, कुछ दे के जा रहा हूँ. खुश रहो अहले वतन, और हम तो सफर करते हैं.
हम जाते हैं, आप लोग खुश रहो। इसी पे गाना बना होगा। Huh? Anyway, yeah, so that share first line will come to me, but second line, that was Bhagat Singh's, that was Bhagat Singh wrote to his brother, the last letter. So he's not a dry person. Atheist means who doesn't love anyone. No, Bhagat Singh. So that's what. So the goal here is कि भक्त होने के लिए शास्त्र आपको प्यार करना सिखाता है। जब भगवान शबरी को कह रहे हैं भाई कि सब मोही मैं जगमग देखा है, जग में देखा, एवरीवेयर इज भगवान, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांग। भगवान सब में है। दैट इज व्हाट दिस होल आसुरी देवी संपदा भगवान इज टेलिंग, राइट। तो एनीवे वी कैन विल 17 चैप्टर विल कम। भगवान ही इज लाइक जो भगत सिंह को हुआ कि ही stop believing in the teaching जो उसकी शास्त्र के भीतर। And there are two reasons psychological, if you look at it. One is either you don't know, or other is you rebel. In two cases where you reject things, normally condition. Either I don't know or I rebel. You reject. So that's what happened to most of us. इसके लिए सत्संग कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। अभी हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं, स्पेशली अमेरिका में तो है ज़्यादा, और इवन भारत में भी है। लॉट ऑफ यंग पीपल, and I meet them all the time. They said, what's the point doing Hanuman Chalisa, or if we are not able to produce something which rest of the world is producing, or technology, or all kind of things, because there is no one giving them the right answer. So that's what rebel is happen, right? So you leave Shastra or some agyan, like भगत सिंह को वो तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों को था, I don't know, so I don't do it. I am not convinced. This is very common these days, like especially young people, because we lack that, the Shastra teaching, or the people who can guide them properly. So that's the reason this 14th and 16th chapter are very important, because this tells us that the consistency, we have to keep doing it. The answers are there, but you do it, then you will get the answer. If you don't do it, then Bhagavan says you're not entitled to do karma. And if you do karma, you will do wrong. And a lot of people say, oh, I do good karma. No, you somewhere you got it, what is good karma. कोई लोग अच्छे भी करते हैं, ऐसा नहीं जरूरी, बट कहीं तो किसी ने बताया होगा, अपने आप नहीं होता है। Otherwise you will make mistakes. So anyway, that's what Bhagavan is trying to say at the end. So we'll read the last slok, which is at the end of every chapter, and then conclude, right? Om Tatsaditi. ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। So at the end of every chapter, you have the English part, you can read. Shripaji then we'll talk about that. Yeah. Oh, that is real. I guess thus in the Upanishads of the glorious Bhagavad Gita, the science of the eternal, the scriptural yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna ends the 16th chapter entitled The Yoga of Distinction of Divine and Demoniac Nature. Yeah. So Srimad Bhagavad Gita is Upanishad. So now they have titled Bhagavad Gita as Upanishad. And very simple, Upanishad is where you get the Gyan. Upanishad which destroys the ignorance, that is Upanishad. Means give the Gyan. Giving the Gyan, destroying the ignorance. You take the medicine and then disease go away. So it's like, that is Upanishad. So Bhagavad Gita is Upanishad because the ultimate, the goal of Bhagavad Gita is to remove the ignorance. That's what Arjun had. A good part, Arjun accepted it. कि भाई मेरे को भी प्रॉब्लम है, लाइक धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषो, दैट इज वीकनेस, दैट इज इग्नोरेंस, एंड यू गाइड मी. सो दैट्स व्हाट भगवद गीता डज. एंड देन ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे. So what Bhagavad Gita teaches is Brahma Vidya.
And Brahma Vidya means there are no two things. There is no Brahma is Vidya. There is no separate thing. Vidya, there is nothing like Vidya. Oh, Tattvamasi. When I know Tattvamasi means everything is gone. It's like you can't say anything. It's gone. Tattvamasi sab ek hi ho gaya. So Brahma Vidya means knowing that I am that Brahman. Nothing else to be known. वो जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक बुक है उनकी, द फ्रीडम फ्रॉम नोन, दैट्स व्हाट ही सेज. एंड ही एक्चुअली ही इज सेइंग द सेम थिंग, freedom from known. Known is like all external thing. It's just freedom from that, and then you are the one, Sakshi or Chaitanya, we call it, we call. And then Yoga Shastra. Yoga Shastra, again the Shastra word is used here. So Yoga means instrument, a method. That's what we do. Yoga means a method, something bringing together. Some principles bringing together is yoga. So Yoga Shastra. So Yoga Shastra for Brahma Vidya. So Bhagavad Gita is a Upanishad which is Yoga Shastra for Brahma Vidya. And Brahma Vidya means Atma Gyan in simple term. Atma Gyan means Vivek Gyan, you can say. Vivek Gyan means I know what is unreal, what is real. What is not true, what is true. That is Vivek, right? So Brahma Vidya is Vivek Gyan. So by this, I come to know what is unreal, what is real. And we know body is unreal. Second chapter. Atma is real. Anything which is not permanent is unreal, because you don't know body is going to die tomorrow, maybe in 10 minutes. Who knows? Nobody knows. So that is unreal. And that is the Gyan. So that's what Bhagavad Gita. Second chapter is the teaching, basically. Second chapter, Bhagavan very clear kar diya hai ki you are not this body. And that's the Gyan, that, oh, I am the body, I am this title. So, and that's what Brahma Vidya is. Yoga Shastra, because this book is a tool that to reach to that. And then Sri Krishna Arjuna Samvada, there is a dialogue. That's the best part. So as I say, it is not Shastra or teacher will just say, oh, this is the way. No. Here is one way. If you have question, ask. So Arjuna is asking questions, Bhagavan is replying. There is nothing asking new, everything. Every time he asks the same thing in a different way. And he is replying in the way he is asking. So that is Samvad. And then chapter. So every chapter they have added. This is our acharyas have added, right? So with that we'll just go to our dhyan, but to Kabir Das ji ka ek pyara doha, and we'll do that. And he says again the same thing, कि ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. So Kabir Das ji, लेकिन जानने के लिए उतरना तो पड़ेगा. You have to go inside, right? At least even if to one thing, you have to go. बाहर बैठ के नहीं मिलेगी. तो he says, right, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ. मीन्स जिन्होंने खोजा गहरे, डीप में जाके, समुद्र में. Because there are jewels, there is a treasure in samudra. So he says, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पेट. Deep inside. हमें अपने अंदर ही जाना है समुद्र में. जिन खोजा तिन पाइयां. उस ध्यान में, मेडिटेशन में जब बहुत अंदर चले जाएंगे तो आएगा. And he says, मैं बोरा डूबन डरा. मैं पागल था जो डूबने के डर से रहा किनारे बैठ, बिना ही बैठा रह गया. मैं डरता था कि डूब जाऊंगा कहीं, वो स्टोरी पानी, तो मैं बाहर ही बैठा रह गया. जो डूबे वो लेके आ गए. तो जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ. मैं बोरन डूबन डरा, रहा किनारे ही बैठा हुआ, कहीं नहीं पहुंचा. So that's what when you go to dhyan, the purpose of dhyan is to go deeper. And खुद ही को मिलेगा, कोई जाके दे नहीं सकता, क्योंकि वो है अंदर ही, कहीं बाहर है नहीं. So with that we'll just do. तो आज भगवान राम का भी ध्यान करके we'll go to our sit for or meditation. We don't do meditation, we create that. Again same, Panchatattva to Sakshi Chaitanya, that is the yatra. Here is a Panchatattva means external word, then 5 senses, that is also external. There is a Man, which is also external. Buddhi, Man means Buddhi, everything is, even Ahankar, that identification, everything is outside, everything is external. The only thing is internal is that Sakshi Chaitanya, which is Gehre Pani Pet, deep mein. That's the whole purpose of shutting down this thing, and then the realization happens. That's what we call it, self-realization. खुद ही को पता लगेगा. Oh.
keep the focus on the tip of the nostril and bring image of Prithvi Tattva. Because the Prithvi is the first element and nostril or nose is the first Gyanendriya. Prithvi means smell because we smell. Smell means Prithvi's form, and through smell comes through nose. Now shift focus to the tongue and think of Jal Tattva. Now shift focus to the eyes and bring image of Agni Tattva, which is Surya Bhagwan, right? Now shift focus to the skin and feel the Vayu. We cannot see Vayu, we cannot touch, but we can feel Vayu on his skin. So if we keep the focus on his skin, we can feel the Vayu. And it is very enchanting and very intense. If intense, this is not the tiring intense, it's like a beautiful, enchanting, pleasing intense. So if we do this, and I always tell like my office colleagues, they follow all these techniques. I tell them, sit outside in the yard sometime when there is a breeze, just feel that. It's a wonderful feeling. The focus is 100% that time. I should focus to the ear, and we cannot sound. Basically, through ear we hear the sound. Sound means space. To feel the space, we know there is a sound. That means there is a space. So keep the focus on ear. We can hear some sound. The goal is not sound. Goal is to feel the space. So all these elements are outside also. All these elements are inside also. That's we are made of Prakriti. Now Bhagavan says in the sixth chapter also the same thing is told to Arjun, that now think that I am not those five elements, I am not these five senses, I am not the mind behind these senses, which gets the feed from the senses, from the world. Now this is self-experience. Nobody can tell you, we only know. Now at this stage, if we do it, I mean we do like 2 minutes, but if we do it for a few minutes, this is the time we can observe the mind, because mind is very quiet. And the one who is observing the mind is the Sakshi Chaitanya. That's why we call it Sakshi, the witness. And we'll see that mind is minimal thought. Sometimes there is no thought. But it is not a thoughtless state. It is a Purna. It is that Sakshi Chaitanya is there. There is no thoughtlessness. Sakshi Chaitanya is the only remaining there. Mind is gone. Then sometimes thoughts come, but we can do the same exercise. But as we do, it happens. And that's what Bhagavan says, Yuktasit Matpara. Arjun, stay in that state. So we'll stop with, because today is Ram Navami, and I'll just do 30-second Ram Jap, which I do that, right? So look at how quiet we are now. So just say Ram Ram, take a breath. So 2 Ram, when inhale, like Ram Ram. Then hold on, 2 Ram Ram, hold the breath, Ram Ram, and exhale with 4 or 2, whatever easy. Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram. So we can do few times. So at this time, my consciousness is full of Ram. The thought, Ram, that divinity or what you call it, Tattvamasi, मैं ही राम हो जाता हूँ. That's why we say रोम रोम में बसने वाले राम. And it happens. So with that, we'll stop. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Bole Krishna Kanhaiya Lal ki Jai.